So in previous class, what we did was, let us say the force is acting at a point A, which has coordinates 0, 0 and +5. So you can see that its x and y coordinates are 0 and z coordinate is +5. So accordingly, I have drawn that point here. And at that point A on a body, there is a force F bar acting, which is represented by 4I cap plus 9J cap minus 40K cap in Newton. So unit is Newton, and this is the representation of force 4I cap plus 9J cap plus 40K cap. And that force has a point of application A. And we asked ourselves a question: what is the moment of this force acting at A at O, which has coordinates? O के coordinates क्या थे? 3, 4, 5. Moksha, do you recall? Mokshat, can you keep yourself unmuted? Yes, sir. 3, 4, 5. Yeah. So that's what we did. And how did we find out this? We जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स was joined with the point where we are calculating moment, that is O, and vector AO bar. I'm sorry. So how did we define vector OA bar was defined as R bar. You agree with me? Yes, sir. हाँ, सो जिस पॉइंट के यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है उस पॉइंट से मिला दो, एंड दैट वेक्टर OA bar represents the R bar. So I have shown that R bar here in this figure. This is the point marked in blue is O. So this R bar cross F bar, the cross product of R bar and F bar is moment of this force at point A. Do you agree with me? Yes, sir. Acha. Now this moment of a force at acting at point A at O is a vector quantity. तो हमने देखा वो कैसा है, प्लस 160 न्यूटन मीटर I cap minus 120 न्यूटन मीटर J cap minus 11 न्यूटन मीटर K cap. I hope you remember this. And I had asked you to find out the moment of that force at O1 and A as well. So I hope that you have done that. Now let us try and solve another problem from the same data. So we are now going to solve the second problem. So I will call it as P2. And in this problem, now what I am going to ask is, find out moment of force F that acts at A at point O itself, but about x-axis. Do you understand the difference? पहले question में, in the first problem that we solved, we only asked what is the moment of a force acting at A at O. We did not specify about which axis passing through O. Are you able to get the difference, Mokshat? Yes, sir. Yes, sir. So as we have not specified the axis in the earlier problem, the moment was a vector quantity, and its axis, the axis about which this moment acts, will be defined by specifying unit vector in this direction. Do you agree with me? Yes, sir. ये ऐसे किया था, लेकिन अब we have changed the narrative of the problem. क्या किया है मैंने narrative problem का? Now I want to find out moment of a force F bar which acts at point A about x-axis passing through O. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? x-axis पास करना पड़ेगा पॉइंट O से. This is the x-axis passing through point O. And इस axis के about what is the moment that is produced due to F bar? ये मुझे बताना है. Are you able to understand the problem statement? Yes, sir. Do you know the answer to it? Yes, we already know the answer. ये हमने कल discuss किया है. That answer should be 160 kilonewton meter. 160 Newton meter. Because it corresponds to I cap. I cap is unit vector along x. So we know that this moment about x-axis passing through O due to force at A is going to be 160 Newton meter. Do you agree with me? Yes, sir. अब जरा डिफरेंस देखो, मैंने जब सिर्फ मोमेंट ऑफ ए फोर्स एट O निकाला है, at that time it is a vector quantity, but when I specify that it is moment of a force passing through x-axis, about x-axis passing through O, at that time I have already specified its direction.
एक्स एक्सिस बोला ना, तो उसका डायरेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. सो देयरफॉर दिस नाउ इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. ये जो है मोमेंट अबाउट एन एक्सिस, आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट. कौन से एक्सिस के अबाउट है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई किया. तो देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी स्केलर. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. दो तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार एक्टिंग एट ए एट ओ. इतना ही बताया, कौन सा एक्सिस वगैरह नहीं बताया. इन दैट केस द मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is composed of magnitude as well as direction. Do you agree with me? Yes, sir. How do you separate the direction and magnitude? तो मैग्नीट्यूड कितना है इस मोमेंट का? स्क्वायर रूट ऑफ 160 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन कौन सा है? तो आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. तो कैसे करूंगा? डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड आई विल गेट द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एम एफ बार ओ. चलो फॉर कंप्लीटनेस वो भी कर लेते हैं. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार अबाउट ओ? ये क्या है बताओ? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 160 स्क्वायर plus minus 120 square. Do you agree with me, Mokshad? Yes, sir. Plus minus 11 square. So use your calculators and tell me what is this number. This is the magnitude. This magnitude will be in Newton meter. कितना आता है बताओ? Sir, 200.30. 200.30 Newton meter is the magnitude. And what is its direction? So direction के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to find out unit vector in the direction of this moment. So I am going to call it as EM cap. And what is that unit vector? How do I write this? 160 divided by this magnitude 200.30. Are you with me? ये किया है ना वेक्टर्स में? Yes, sir. I cap, are you with me? Minus 120 upon 200.30. J cap minus 11 upon 200.3. किसी को अगर इसमें कुछ डाउट है तो अनम्यूट करो और पूछो. डोंट कीप योर डाउट्स विथ यू. बाय आस्किंग ए डाउट you will be ridiculed only for a second, but if you don't ask the doubt you will be ridiculed for life. तो पूछो k क्या. तो ये डायरेक्शन है इस मोमेंट का. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नैरेटिव जरा देखो. आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ सेम फोर्स एफ बार एक्टिंग एट सेम पॉइंट ए but about an x-axis, about x-axis passing through. Happy? ये पूछा है. Now as I have specified कि मुझे कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट चाहिए इस फोर्स का, therefore this becomes now a scalar quantity and we know what it is. We know that it is going to be 160 Newton meter because this corresponds to I cap. I cap is along x-axis. Therefore इसका आंसर मुझे पहले से ही पता है. It is 160 Newton meter. Do you agree with me? Yes, sir. हाँ, पर उसको जरा हम वेक्टोरियल लैंग्वेज में बताएंगे. हाउ डू वी फाइंड आउट दिस? सो इफ यू वेर टू फाइंड आउट दिस, यू फर्स्ट फाइंड आउट एमएफ. You just find out moment of this force F bar about O. Are you with me? ये Yes, पहले sir. फाइंड आउट करो. हाउ डू वी फाइंड आउट दैट? इट इज R bar क्रॉस F bar. दिस इज ऑलरेडी फाउंड आउट. ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है. एंड देन टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि क्वांटिटी स्केलर आना चाहिए. तो स्केलर के लिए कौन सा प्रोडक्ट रहता है? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? Dot product. Dot product. Dot product with what? Dot product with unit vector along the axis about which you want to find out moment.
तो अभी कौन सा एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है? एक्स एक्सिस. सो उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. So this will be the answer of this question. तो क्या करना है? We have to take dot product of moment of f bar at O with unit vector along the axis about which we want to find out the moment. Happy? Yes, sir. Now let us say I want to find out moment of this force about y axis passing through O dash. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा mf O dash. Are you with me? Yes, और sir. फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जे कैप के साथ, बिकॉज जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन. एम आई वेरी क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट दिस. ये कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा? देखो, 160 आई कैप माइनस 120 जे कैप. 160 आई कैप माइनस 120 जे कैप माइनस 11 के कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है. किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है? वी हैव टू टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट विथ, बोलो, आई कैप के साथ. आर यू विथ मी? So J cap. No, no, that is if I wanted to find out about y axis. Right now I Okay. want to find out about x axis, right? I gave that just as an example. Okay, okay, sir. So as I want to find out moment about x axis, I will take dot product with unit vector along x axis. So ये कितना आने वाला है बताओ मुझे? I cap dot I cap is 1. I hope you agree with me. Yes, sir. So it is going to be 160. J cap dot I cap is 0 because because 1 into 1 into cos 90 is 0. J cap और I cap के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना? Yes, sir. So therefore J cap dot I cap and K cap dot I cap both are 0. So next terms are going to vanish and you are going to get the answer as 160 Newton meter. Happy? Yes, sir. And that's what we expected. ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम. आर यू विथ मी? Yes, sir. अब जरा देखो, इसी प्रॉब्लम को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. द सेम प्रॉब्लम. नाउ इन प्रॉब्लम नंबर 3 I want to find out moment of force F bar हेलो. हाँ, चलो मोक्षद, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार एक्टिंग एट ए पे ही एक्ट हो रहा है अबाउट एक्सिस पैरेलल टू. देखो पैरेलल का ये सिग्नेचर होता है. सो पैरेलल टू ओ ओ डैश. आर यू विथ मी? मोक्षद, हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? Yes, sir. तो क्या करना है हमें? आई वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ F bar about an axis parallel to O dash passing through which point? Passing through O. Passing Through. through O. मतलब O में से पास होने वाला. Passing through, I am using short form. Passing through O.
सो ओ में से पास होने वाला, लेकिन कौन सा एक्सिस, ओ डैश को पैरेलल एक्सिस चाहिए. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश, चलो बताओ मुझे. ओ डैश O1, सो आई एम सॉरी, नॉट ओ डैश, इट इज O1. हमने O1 लिखा है तो आई विल मेंटेन इट एज O1. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O1. देखो O1 के कोऑर्डिनेट्स है 498. 498. Are you with me? So let me say this is point O1. Now I am just drawing it as a representation. This O1 has coordinates of 498. Are you with me? 4, Yes, sir. 9 and 8. These are the coordinates. अच्छा, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? I want to find out moment of F bar about an axis parallel to O1. मतलब O1 मुझे पहले ज्वाइन करने पड़ेंगे. Are you with me? Yes, sir. So चलो, let us try and join this O and O1. तो ये जो डायरेक्शन तैयार होता है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के अबाउट ओ में से, ओ के यहाँ पे कितना मूवमेंट है एफ बार की वजह से, ये क्वेश्चन है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा? एज आई सेड, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर along the direction about which you want to find out movement. जैसे यहाँ पे कौन से एक्सिस के अबाउट चाहिए था? एक्स एक्सिस के अबाउट. यहाँ पे कौन से एक्सिस के अबाउट चाहिए? ओ डैश के अबाउट. सो आई विल फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ओ डैश. आर यू विद मी? Yes, sir. सो पहले आई विल फाइंड आउट O1, सॉरी, ओ वेक्टर O1. ये कितना आता है बताओ मुझे, कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O1 माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो 4 minus 3 मतलब 1 I cap. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes, sir. So 153. Right. So 1 plus 5 J cap plus 3 K cap. 3 K cap. This is vector O1, but mind you, this is not unit vector. तो इसको अगर यूनिट वेक्टर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ O1. Agreed? Yes, sir. So how do I find out magnitude of O1? कैसे करूं? It is going to be square root of 1 square plus 5 square plus 3 square. So tell me how much is that? Sir, 5.9. So it turns out to be exactly 5.9. 5.916. So 5.92. We will take it as 5.92. This is the magnitude of O1. So अब मुझे क्या करना पड़ेगा? How do I write unit vector in the direction O1? So E, unit vector का सिंबल है E कैप. सो O1 कैप, ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखूं मैं? 1/5.92. मैग्नीट्यूड से सब टर्म्स को डिवाइड करना होता है. 92 I कैप. एग्रीड? Yes, sir. यस. चलो, 5/5.92 J कैप प्लस क्या लिखूं? 3/5.92 K कैप. हैप्पी? दिस इज द यूनिट वेक्टर. और अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट नाउ ओ एम एफ बार. ये जो एक्सिस है कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? ओ के यहाँ पे. सो आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एम एफ बार ओ, मतलब मोमेंट ऑफ एफ बार एक्टिंग एट ए अबाउट ओ. ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी और वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. सो आई विल नॉट रिपीट द कैलकुलेशन, बट वो स्टेप है बीच में. अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? इस तरीके से, आर बार क्रॉस एफ बार. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, और वो हमने कितना फाइंड आउट किया है? 160 आई कैप. 160 आई कैप. जरा बताओ मुझे क्या है? -120 -120. ठीक है. जे कैप -11 K cap.
माइनस 11 के कैप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर जो है ये फाइंड आउट करने के लिए, सो आई विल कॉपी दिस टर्म, कॉपी पेस्ट। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। आर यू विथ मी? Yes, यूनिट sir. वेक्टर O1 डॉट डॉट क्या लिखू, MF बार O। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो ये डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लेते हो? सो डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है तो आई कैप डॉट आई कैप ही सिर्फ वन आता है, जे कैप डॉट जे कैप ही वन आता है, के कैप डॉट के कैप वन आता है, बाकी सारे वैनिश होते हैं। सो इट इज लाइक सेइंग 160 अपॉन 5.92 आई कैप। डू यू एग्री? Yes, sir. 160 अपॉन 5.92 आई कैप, sorry, not I cap. 160 upon 5.92 I cap dot I cap is One. मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, therefore this is into 1. So 160 upon 5.92 प्लस प्लस क्या आने Minus. वाला है, माइनस 120 इंटू 5 अपॉन 5.92, माइनस 120 इंटू 5 अपॉन 5.92। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. अच्छा, एंड तीसरा क्वांटिटी क्या आने वाला है, 3 33. minus 33 upon 5.92, minus 33 upon 5.92. Can you solve this and tell me the answer? Minus 79.89. Minus 79.89. 0.89। अच्छा, माइनस साइन का मतलब क्या है जरा बताओ, और ये न्यूटन मीटर में है। माइनस साइन का मतलब क्या है? सो दैट मीन्स ये जो ओ डैश एक्सिस आपको दिख रहा है, इफ यू कीप थंब ऑफ माइनस साइन आया ना, तो Yes, अगर sir. प्लस साइन आता तो यू वुड हैव kept the thumb of your right hand pointing from O towards O dash, Yes. पॉजिटिव। लेकिन जो निगेटिव साइन आया है इसका मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स O फ्रॉम O dash। समझ में आ रहा है? Yes, sir. And then curl fingers will be in this fashion. Do you agree with me? Yes, clockwise. Clockwise if seen from O dash, हाँ. O dash towards O आप देख रहे हो तो clockwise। Are you with me? Yes, sir. हाँ, तो निगेटिव साइन का मतलब है, निगेटिव साइन का मतलब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। अब जरा देखो, निगेटिव साइन है therefore, इसका मतलब therefore बोल रहा हूं। और आंसर कैसे लिखना है देखो, आई एम ड्रॉइंग O डैश हियर, O डैश यहाँ पे ड्रॉ किया, O not O dash, I am very sorry, O1, and I am drawing O here. So you are looking now from O1 to O, not from O to O1. O to O1 कब आप देखते हैं, अगर ये साइन पॉजिटिव रहता, लेकिन जो कि ये साइन निगेटिव है, so therefore the direction of the moment is opposite to unit vector along O dash, मतलब it is from O dash to O. Do you agree with me? Yes, sir. So you are looking in this direction, ये देखने का direction मैंने दिखाया है। You are looking from O dash to O. You will keep thumb of your right hand from O dash to O, and then in that case the moment of this nature will be seen. This is the meaning of negative sign. Are you with me? Sir, we have taken unit vector of O1 vector. Correct. So the direction will be seen from O as a clockwise. Yes. See, no. Wait. O1 आपने दिखाया ना वेक्टर, तो आपको देखना कैसे चाहिए, O से O1 के तरफ देखना चाहिए। Do you agree with me? Yes, sir. Yes, yes. लेकिन मैंने यहीं पे निगेटिव साइन का कॉग्निजेंस लिया है, सो नाउ आई स्टार्टेड लुकिंग फ्रॉम O1 टू O, तो वो निगेटिव साइन हो गया। Okay, okay.
and now fingers of your fingers of your right hand will be curled in this direction. Okay, तो sir. अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलने के इसमें पढ़ो ही मत. The moment is of this sense. If you look from O1, it is clockwise. If you look from O, it is anti-clockwise. Are you with me? Yes, sir. So I hope everybody has understood what I am trying to do. I will ask few of you so that I am satisfied. Deep, have you understood what we are doing? Deep, can you unmute? Yes, sir. Okay. Harshavardhan, have you understood? Yes, sir. Okay. Is there anyone who has not understood what is going on? Please let me know. I will quickly repeat. Okay. So can you please repeat the last part once again? But this minus sign का meaning? Yes, sir. हाँ, ओके. सो माइनस साइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. मैं दूसरे भी एंगल से आपको समझाता हूं. है, लेट अस से देखो, अगर आप O से O1 को के तरफ देख रहे हो, बिकॉज वी हैव फाउंड आउट यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन फ्रॉम O to O1. Are you with me? So somebody would prefer always to look from O to O1. Agreed, no issues. So you are now looking from O to O1. Are you with me? डाउट किसने पूछा था? नाम Yes, क्या है? sir. नाम बताओ. Paritosh, sir. Paritosh, keep yourself unmuted. Let us say somebody is thinking along a different perspective. I chose unit vector from O to O1, so I will keep looking from O to O1, no matter what is the sign of moment. ऐसे मैंने decide कर लिया. Are you with me? Yes, sir. So if you are looking from O to O1, keep your thumb of right hand pointed from O to O1. Then curved sir. fingers would indicate the direction of moment. Do you agree with me? Yes, sir. तो वो मोमेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना? डू यू एग्री विद मी? आर यू एबल Yes, टू sir. इमेजिन? Yes, sir. ऐसे दिखेगा. हाँ, लेकिन जब आप O to O1 देख रहे हो तो ये जो डायरेक्शन आता है, लेकिन साइन कौन सा है आपका? नेगेटिव आया. आर यू विद मी? Yes, sir. हाँ, सो द ट्रू साइन ऑफ द मोमेंट इज अपोजिट टू दिस. मतलब ये कैसे होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए. आर यू विद मी? Yes, sir. हाँ, तो उसका मतलब यही है, अगर आप O1 से O के तरफ देखते हो तो क्लॉकवाइज दिखेगा, O से O1 के तरफ देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा. आर यू विथ मी? Okay, sir. Yes, sir. इस तरीके से भी ये समझाया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका भी बताता हूं जो मैंने बताया. देखो, वी फाउंड आउट यूनिट वेक्टर फ्रॉम O to O1, लेकिन फाइनल साइन हैज टर्न आउट टू बी नेगेटिव. इसका मतलब है आई हैव टू लुक फ्रॉम O1 to O. Yes, sir. And I will put my thumb of right hand pointed from O1 to O, and whatever is the direction of moment, that is this moment direction. तो वो भी वही आएगी. Are you with me? Yes, sir. हाँ, तो कैसे भी तरीके से देखा जा सकता है. इट इज जस्ट द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो आपको इजी पड़े उस हिसाब से देखो. हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ? Yes, sir. समझा है ना? Yes, sir. ओके. मतलब ऐसे ही यस मत बोलो. अगर नहीं समझा है तो मैं और फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं. परितोष. No, sir. It's fine, sir. I got it. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. सो ये आपको समझ में आया. सो व्हाट इज द समरी? इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ ए फोर्स acting at a particular point at some other point, that will be a vector quantity. But if I ask you to find out moment of a force acting at a particular point about particular axis passing through another point, then it will be a scalar quantity. Do you agree with me? मुक्षत. या, सो अब जरा इसको ही और एक तरीके से देखते हैं. इनफैक्ट वी टूक ए डॉट प्रोडक्ट. किस किस का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने? आर बार क्रॉस एफ बार एंड इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने यूनिट वेक्टर के साथ. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, सो इजंट इट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा है ना? Yes, sir. हाँ, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला क्या रहता है बताओ? हाउ डू वी राइट? Sir, हाँ, unit vector, then R, then F vector. यूनिट row वेक्टर. हाँ, यूनिट वेक्टर. सो E1 E2 E3. Yes, then R1, R2, R3, R2 R3. then F1, F2, F3.
So you can as well use this instead of taking dot products. Directly ये भी use कर सकते हो. So scalar triple product in mathematics in fact indicates moment of a force about a particular axis passing through a given point. Are you with me? Yes, sir. हाँ, और notations क्या है? Unit E1, E2, E3 are x, y, z components of a unit vector passing through that axis. Unit vectors of that axis passing through the point. Whereas R1, R2, R3 are x, y, z components of position vector, and F1, F2, F3 are x, y, z components of force. Happy? तो ये भी नोटेशन हम देख सकते हैं, ऐसे इस नोटेशन से भी ये लिख सकते हैं. All right. So we have now solved 3 problems based on moment of a force at a point or about a particular axis passing through a point. ये हो गया. अब just give me a minute. Now let us proceed. Let me ask you now reverse question. चौथा problem solve करेंगे आज. Can you locate the axis about which the moment of a force will be zero? कौन से axis के about zero होगा? मोक्षद, any idea? So can you repeat again? Okay, so I am now going to give you this question as a clicker question or thought-provoking question. You are going to think on it and you are going to let me know in the next class whether you can answer that. If not, we will solve it in the class. So what is problem number 4? Problem number 4 is this. Tell me and direction. That means find out E cap such that moment of force F bar acting at A about E cap direction through O is zero. Did you understand the question now? Yes, sir. So क्या करना है आपको? You have to find out that E cap or that direction which passes through point O such that moment of force about E cap direction passing through O is zero. And then based on this, we are going to make certain remarks. Are you with me? So this is a clicker question. You have to think on it and you have to tell me in the next class. Now my teaching style is respond to what I get. So अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो इसका रिमार्क मैं नहीं दूंगा. If you solve this in the next class, then we will discuss about the remark. चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज एडिशन ऑफ फोर्सेस. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इन लाइन. अभी तक हमने क्या क्या देखा जरा एक बार समराइज करते हैं. फोर्स, इट इज एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर. देन moment of a force changes from point to point on a body. Both it may change either in magnitude or in direction or in both. Then we discussed about moment of couple of forces. Moment of couple of forces produces only rotation, no translation anywhere in the body. ये हो गया. Then we solved problems on moment of a force at a point, moment of a force about an axis passing through a point. Are you able to recall all these things, Mokshad? Yes, sir. Mokshad? Okay. Now I want Sakshi to keep your microphone unmuted. Sakshi? Yes, sir. Yes. Okay. अब हम next point discuss करेंगे and that is addition of forces. So how do you add two forces? What is your understanding? अब तक 11th 12th में सीखा है आपने, तो कैसे ऐड करते हो बोलो. Addition of
two forces. साक्षी सीखा है ये कैसे ऐड करना है? Sakshi, unmute yourself. Yeah. Yes, sir. So let me say, keep yourself unmuted, don't mute. So let us say this is P bar. Okay. And this force is Q bar. Q bar. How do you add these two forces? Bolo. Anyone can answer for that matter. सर इनका रिजल्टेंट वेक्टर. How? कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? सर वेक्टर एडिशन सर और रेक्टेंगल. No, first of all, you tell me the construction that you are going to do and then tell me the formula. I am very sure you have done this. Let us say Sir, the triangle law, angle triangle law और parallelogram law और r1 square plus r2 square plus 2 r1 r2 cos theta का अंडर रूट. हाँ, तो मतलब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे? Am I right? Yes sir. So you are going to draw a line parallel to Q bar from tip of vector P. You are going to draw line parallel to P bar from tip of vector Q. Then this parallelogram is completed. और फिर ये जो होता है उसको आप R बोलने वाले हो. Do you agree with me? R bar. And we say that R bar is equal to P bar plus Q bar. Do you agree with me? Yes sir. Okay. Now let us first complete the skeletal part of it. Parallelogram law क्या है वो पहले लिख लेते हैं. I did not prove this to you. You have already done that. So I will not waste my time in proving this. However, the proof is very much in the syllabus. It can be proved. If you want, I will share with you the document of the proof. But I am very sure that you have done this. So we use the trigonometry and then we say what is R, magnitude of R? That is magnitude of R bar square root of, बोलो कोई तो बोलो, P square plus Q square Q square plus PQ cos theta. 2PQ cos theta. Do you agree with me? Yes, sir. Cos theta. हाँ, तो ये हुआ मैथमेटिक्स बिहाइंड द एडिशन. अच्छा, ये हो गया. एंड देन व्हाट इज द एंगल दैट R bar makes with Q? इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं. तो ये क्या होता है बोलो? tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो एनीवन? अरे अगर याद नहीं है तो गूगल सर्च करो और मुझे बताओ क्या फॉर्मूला क्या है. Just a You are second. going to tell me the formula. Q sin theta by P plus R cos theta. Q Q sin theta divided by P plus Q sin cos theta divided by P plus R. Yes, sir. Q sin theta divided by P plus divided by P plus Q cos theta. P plus Q cos theta. is it the angle with Q or is it the angle with P? Angle of Sir, R it is the angle with P. Yes, it is the angle with P. हाँ. तो what did I ask? I asked alpha. It is the angle with Q. Are you with me? Yes, sir. So is it P sin theta upon Q plus P cos theta? Am I correct? Yes sir. Sir, it will become beta, no? Tan beta हो जाएगा sir. Pardon? Sir, it will become tan beta. It's not tan alpha, no. I think so. Sir, Q sin theta रहेगा ना? आप ही बताओ मुझे. Sir, Q sin theta हाँ, Q sin theta by
Q plus P cos theta. फिर से बोलो q sin theta plus. Okay, just 1 minute. Let me call this angle as beta. Now tell me, whatever we have written, is it tan beta or tan alpha? It's a tan alpha only. This is tan alpha. So when you are writing down angle made with q bar, it is p sin theta upon q plus p cos theta. And when you are writing down angle made by resultant with p bar, it is q sin theta upon p plus q cos theta. Am I correct? Sir. Yes, sir. हाँ. So you have to be very careful आप किसके साथ किसका एंगल निकाल रहे हो. We will also cross verify this and cross verify this if there is any mistake in this, but that's how our understanding is. Alpha निकाल रहे हैं या beta? Alpha means whether we are finding out the angle with q bar or angle with p bar. Depending on that, this formula will take different shape. Form is same, but the terms will vary. Happy? Happy? Mukshat? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am not very much keen about this. This is mathematics. Anybody can do this. You can prove this. You can remember this formula. You can find out resultants. Everything is fine. No issues. The question that I am going to ask now is more important. Why do you think that this should be the addition of two forces? Sir, bolo. Why do you believe? For example, let me put you the alternative argument. 1 minute. समझो, इस तरीके से एडिशन करने के बजाय दिस इज p bar and this is q bar. Happy? Let me say that I will consider this point as the center. I will consider this length. I will draw p bar to scale, some scale. If p bar is 10 Newton and my scale is 1 centimeter equal to 1 Newton, this will be 10 centimeter line. Are you with me, Mokshat? Yes, sir. I will now take this much distance in compass. I will draw a circle. Then I will take O as a center. I will take this much distance, that is OQ bar distance. Q bar distance. This also I would have plotted to the scale. Let us say Q bar is 5. Then this line will be 5 centimeter. So I will take this distance in my compass and I will draw another circle. Can I do that? Yes, I can, of course. And wherever these two meet, that point I will join with O bar and I will define this as the addition of P bar and Q bar. कर सकता हूँ क्या ऐसे? Are you with me? Yes, sir. If you believe in one geometrical construction, why not believe in another geometrical construction? Are you getting my point? If you believe that completing the parallelogram will lead to the addition of these forces P bar and Q bar, then why not believe that this form of construction of drawing arcs of a circle and then calling that point intersection point joining with O and then calling that as R bar, इसमें क्यों नहीं believe करते आप? So therefore, the basic question to ask is, why do we believe in parallelogram law? Does anyone have answer for this? Sir, we can move the vector parallel to that vector in any space. हाँ, लेकिन उसका parallelogram law से क्या मतलब? That's okay. I agree with you. Means we have not yet done that. We have not yet talked about that principle, but it's correct. But how does it justify that to add two vectors, I should use parallelogram law? Sir, if we know triangle law, then by shifting the no. vectors. Triangle law is the corollary of parallelogram. देखो यहाँ पे ही प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ को.
just see this q bar. I move it parallelly here. As you said, I can call this as q bar, and then p bar and q bar in tip to tail fashion, tail to tip fashion, r bar in reverse fashion. So triangle law is in fact the corollary of parallelogram law. It is mathematical geometrical representation of parallelogram law. So if triangle law is satisfied, in other way you are saying that add it by parallelogram. My basic question is, why do you believe this form of construction only? पैरेललोग्राम से ही वेक्टर्स ऐड होंगे, ऐसे आप क्यों बिलीव करते? Anyone? As vectors directions are specified, so we are easily be able to arrange that vectors in a parallelogram form, and makes easier for us for calculation. Though Right. we can add vectors in any geometrical figures, but if for parallelogram it is easier for us. Okay, who is this? नाम बताओ. Kushagra. Pardon? Sir, Kushagra. कुशाग्र, I will ask you the reverse question. अच्छा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है? Yes, sir. मैं 2i plus 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका रियल पार्ट रहता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है. इज इट इजी टू वर्क विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इज इट इजी टू वर्क विथ रियल नंबर्स? Then as I find it easy to work with real numbers, I will not study complex numbers. Sir, but sir, we can't add vector as simply as a scalar addition, so that's why. That's correct. So I first of all I was trying to answer the first part. Just because it is easy to do something, that does not mean that it will be correct on the scientific grounds. ये पहली चीज. That's why I told you, sir. Parallelogram law of addition is not only one type of addition. How we can add vectors? There are many others through which. But No, if we agree that there are many other types of additions, that means for the same addition we would accept many answers, which is not correct. एक ही आंसर आना चाहिए ना addition का. Do you get my point? If I call this R bar as the addition of P bar and Q bar, it is definitely different than what I get from parallelogram law. तो ऐसे तो नहीं हो सकता. Addition का आंसर एक ही आना चाहिए. 1 plus 2 is 3. Are you with me? ऐसे भी करो. 1 plus 2 को करने के कितने सारे तरीके हैं. 1 plus 1 plus 1 3. 2 को मैंने डिवाइड किया. Are you with me? 1 plus 3 minus 1. ये तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर तो एक ही आता है ना. वैसे fundamental question that we are trying to ask here is, why do we believe parallelogram law? And possibly this has not been discussed, not been taught, not been given in any of the books, but this is the fundamental, this is the basic on which any science is built. तो पहले इसको जरा देखते हैं. Why do we believe in addition of forces in this fashion, parallelogram fashion? तो अब मैं आपको इसके ही थोड़ा सा डायग्रेस लगेगा आपको, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं. सबसे पहले वेक्टर मैथमेटिक्स आया होगा या सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन आया होगा? मतलब सबसे पहले किसी ने फोर्सेस को ऐड करने की कोशिश की होगी, या पहले वेक्टर का मैथमेटिक्स डेवलप हुआ और फिर फोर्सेस को वेक्टर जैसा ऐड किया? इन दोनों में से आपको क्या लॉजिकल लगता है? सर फोर्सेस को ऐड किया होगा पहले. राइट. सो वी स्टार्ट विथ द फिजिकल क्वांटिटी. मैथमेटिक्स इज ए टूल, ये आपको ध्यान में रखना है. If the answers from mathematics are not matching with the reality, that is useless. You have to throw that in dustbin. Are you with me? Yes, sir. तो therefore सबसे पहले क्या आया होगा? The fundamental question: how do I add forces? How do I add velocities? How do I add accelerations? ये questions पहले आए होंगे. Are you with me? Yes, sir. हाँ, अब जो क्वांटिटीज है जो पैरेललोग्राम लॉ जैसे ऐड होते हैं, उन सारे क्वांटिटीज को क्लब किया होगा और उनको बोला होगा वेक्टर, और बाद में उसका वेक्टर मैथमेटिक्स डिफाइन किया होगा. आर यू विथ मी? दिस इज द प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आर यू विथ मी? Yes. अब जरा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि फोर्सेस पैरेललोग्राम लॉ से ऐड होते हैं, ये हमें कैसे समझा? तो उसके लिए हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय एडिशन. फॉर एग्जांपल, लेट मी से आई हैव 2 apples, Mokshad has 3 apples. I give my 2 apples to him. Now he has 5 apples. इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. We understand addition this way. स्केलर का एडिशन समझ में आता है. Are you with me? Yes, sir.
वेक्टर्स के एडिशन में बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? बिकॉज वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो समझो 10 न्यूटन का फोर्स है और 20 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन के दो फोर्सेस है, तो उनका एडिशन हमेशा 20 न्यूटन नहीं आएगा। इफ these two forces are acting in opposite direction, their addition may turn out to be zero. Are you with me? Yes, sir. हाँ, therefore जो जिस क्वांटिटी को एक अगला डायमेंशन है डायरेक्शन नाम का, उसको कैसे ऐड करें, पहले तो हमें एडिशन का फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। Are you with me? Yes, sir. तो ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट क्या होगा, ये बनाने की हम पहले कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय एडिंग टू फोर्सेस। दिस इज द मोर फंडामेंटल क्वेश्चन। वंस वी क्लियरली डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, देन वी विल गो एंड सी हाउ डू दे ऐड। डू यू एग्री विथ मी टिल नाउ? Yes, sir. चलो, तो अब जरा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से वी हैव नाउ ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट। इट्स ऑल राइट, जितना हो सके उतना आज करेंगे, कल बाकी कल। So imagine that there is a body here. The moment I draw the body in this fashion, I am not interested in its shape and size. Do you agree with me? Yes. हाँ, तो इसके ऊपर अब मैं जरा दो फोर्सेस दिखाता हूं। कौन से है? ये P बार एंड Q बार। ये दो फोर्सेस यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर मैंने दिखा दिए। कैसे लगाए मत पूछना, कुछ भी करके कुछ भी जुगाड़ लगा के मैंने ये दो फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लगाए हैं। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, नाउ इन दोनों फोर्सेस के बीच पे एंगल भी पता है, वो है थीटा। लेट अस से हैप्पी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एडिशन ऑफ दिस टू फोर्सेस? इन फर्स्ट प्लेस व्हाई वुड आई रिक्वायर टू ऐड दिस फोर्सेस, ये हमें सोचना है। तो अब जरा मैं खुद से ही एक सवाल पूछता हूं, इस बॉडी के ऊपर ये जो दो फोर्सेस है, उनके वजह से बताओ मुझे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा कि नहीं बॉडी के ऊपर? Yes, sir. हाँ, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को निकाल दूं, if I remove these two forces and if I apply a single force on a body, are you with me? जिसको मैं बोलूंगा R bar, such that it has the same effect on all points of the body, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, सारे पॉइंट्स पे। P बार और Q बार के वजह से जो बॉडी के सारे पॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, जो भी है वही इफेक्ट अगर सिर्फ एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है आर बार, कहां लगाया हुआ? ओ बार पे ओ पे लगाया हुआ, तो मैं बोलूंगा आर बार इज द एडिशन ऑफ पी बार एंड क्यू बार। आर यू विथ मी? Yes, sir. ये हमारा फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के लिए क्या करना है? पी बार और क्यू बार को रिमूव करो और उसको एक ही फोर्स आर बार से रिप्लेस करो, सच दैट इट हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी एज पी बार एंड क्यू बार टुगेदर हैड। तो उस आर बार को मैं बोलने वाला हूं पी बार प्लस क्यू बार। दिस डेफिनेशन गोज वेरी क्लोज टू रिजल्टेंट, बट रिजल्टेंट ये टर्म हमने अभी टॉस नहीं किया है, वो बाद में ही टॉस करेंगे। बट दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो चलो मुझे बताओ फोर्सेस के बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? Change in direction, magnitude, shape, form, नहीं, बेसिक इफेक्ट है एक्सेलरेशन। डू यू एग्री विथ मी? state of motion. हाँ, एक्सेलरेशन, इट विल चेंज इट्स स्पीड, इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो अगर सिर्फ पी बार इस बॉडी के ऊपर रहता और ये बॉडी वैक्यूम में रहती, तो अंडर एंड देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी की कोई फोर्सेस नहीं है, आइसोलेटेड है, और उसके ऊपर ये पी बार रहता, किसी दूसरे बॉडी ने लगाया हुआ, पर पी बार अगर रहता वैक्यूम में एंड विदाउट एनी अदर, डिवॉइड ऑफ एनी अदर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर रहता, तो क्या ये बॉडी पी बार के डायरेक्शन में मूव होती? Yes, sir. और क्या ये बॉडी एक्सेलरेशन पजेस करती या नहीं करती? It will. यस, वो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में रहता? पी बार के डायरेक्शन में। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, अब इस बॉडी के ऊपर सिर्फ क्यू बार अगर स्पेस में है एंड इट इज डिवाइड ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एनी अदर काइंड ऑफ फोर्सेस,
तो फिर क्या ये बॉडी क्यू बार के डायरेक्शन में मूव करती या नहीं करती? It will. एंड विल इट possess acceleration in the direction of q bar? Yes, sir. अब जरा ध्यान में रखो, पी बार और क्यू बार दोनों अगर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्या मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? We can, sir. वी कैन ऑब्जर्व. सो देखो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. कैसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है? बॉडी के ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस लगाए. कौन से? पी बार और क्यू बार. और मैंने ऑब्जर्व किया कि पी बार और क्यू बार इन दोनों के साइमल्टेनियस एक्शन होने पर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. कैन आई मेजर दैट? हाँ, आप लेजर इमेजेस लेते रहो बॉडी के, आपको उसका डायरेक्शन प्लॉट करने आएगा. आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर ये पी बार और क्यू बार को निकाल के मुझे सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ही तो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव होगी. आर यू विथ मी? Yes, sir. Therefore, I can experimentally observe this direction along which the body moves or accelerates इन प्रेजेंस ऑफ पी बार एंड क्यू बार बोथ. वो डायरेक्शन अगर मैंने ड्रॉ किया, प्लॉट किया, टू माय सरप्राइज that direction turns out to be the direction given by diagonal of the parallelogram completed from p bar and q bar. Are you with me? Yes, sir. ऐसे ही नहीं आया ये. This has come from the experiment. कितने जगह एक्सपेरिमेंट किया? ऑन अर्थ, ऑफ अर्थ, बहुत सारे जगह पे एक्सपेरिमेंट किया. सब एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे एक ही बताया कि अगर बॉडी के ऊपर पी बार और क्यू बार ये दो फोर्सेस है और मैंने अगर इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्व किया, तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है कौन सा? तो पी बार और क्यू बार को स्केल से प्लॉट करके अगर मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल का जो डायरेक्शन है, उस डायगोनल के डायरेक्शन में बॉडी मूव होती है. आर यू विथ मी? Yes, sir. Therefore, I got to know that R bar is going to be in the direction of this diagonal. Are you with me? Yes, sir. अच्छा, अब इसको मैं R bar का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करूं? तो बॉडी का मास आपको पता है, मास मेजर कर सकते हो. यस. कैन यू फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉडी? यस. कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? Yes. हाँ, आपने डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स को फोटोग्राफ्स लिए हैं, तो उससे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आएगा. If it reaches 100 meters in 5 seconds, can't you apply the laws of uniformly accelerated motion and find back calculate the acceleration? Yes, sir. We can. ut plus half at square, ये s is equal to ut plus half at square, ये इक्वेशन लगाओ और उससे आप उस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो. तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करने आता है और मास भी फाइंड आउट करने आता है. इफ आई वेर टू रिप्लेस बोथ दिस फोर्सेस बाय सिंगल रिजल्टेंट आर, single force acting in r direction, Newton's second law that r must be equal to mass into acceleration. एक ही फोर्स है तो अनबैलेंस फोर्स सिर्फ r बार है, that must be equal to mass into acceleration. तो क्या आप वो फोर्स प्रेडिक्ट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली? हाँ, कर सकते हैं. मास इज मेजरेबल and its acceleration is also measurable. The only force acting in this direction is r bar. Are you with me? Yes, sir. हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड. P और Q बार जिस स्केल से प्लॉट किए, उसी स्केल से अगर मैंने R बार प्लॉट किया, टू माय सरप्राइज दैट पॉइंट ऑकर्स हियर. आर यू विथ मी? Yes, sir. And therefore, parallelogram law is experimentally proven, doesn't have any mathematical, analytical or logical proof. Therefore, this is one of the axioms of mechanics. हमने डिस्कस किया ना axioms. Yes, sir. So this is one of the axioms of mechanics which is experimentally proven. Happy? Yes, sir. Have I answered now the question, why do forces get added by parallelogram law? Yes, sir. अब इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली ऐड होते हुए नजर आने वाली चीजें कौन कौन सी है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उन सारे चीजों को क्लब करके उनको वेक्टर बोला. Are you with me? Yes, sir. हाँ, so that's how. And ये जो मैंने लिखा है,
दिस इज ओके, मतलब इसमें क्या ग्रेट है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, कोई भी प्रूव कर सकता है मैथमेटिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई डू वी बिलीव इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. हैप्पी? यस सर. हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, टू और मोर फोर्सेस. सो लेट अस क्लोज टुडे. We ventured 2 minutes into my next lecture. Anyway, let us stop here today. We will meet next time, next lecture once again. Chalo, good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Hopefully everyone has written your name and roll number in the chat box.